There are few things that we discuss. First is cost price is the investment. आपने कोई चीज सामान खरीदा, that is your investment, that is the cost price, that is the money you spend to buy something. If you are selling something, you are getting a revenue, that is known as the selling price. The difference between selling price and cost price is known as a profit. Profit percentage is when you compare profit with respect to the cost price, it gives you the profit percentage. एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूं, एक वर्ड और है margin. Margin is when you compare profit with respect to the selling price, it is known as a margin. आप कभी शॉप में जाओ और आप मान लो आपने 2000 रुपए का कोई सामान खरीदा है, तो आपको दुकानदार हमेशा बोलता है इसमें मार्जिन नहीं है, मार्जिन इज 2%, 5%, ये स्टैंडर्ड होता है, कितना भी हो लेकिन वो यही बोलता है. तो मार्जिन इज 5% मींस whatever is the price that you are paying, I am taking a 5% of that. मतलब 100 रुपए कमा. क्या मेरी बात समझ? This is how they are doing it because the margin is supposed to be calculated with respect to the selling price. Now people are not very intelligent that they find out the cost price and then they find out the profit percentage. इसीलिए margin का use होता है. So profit percentage is calculated over cost price and margin is calculated over. Many a time it is the word margin is mentioned. They say the margin is 20% on cost price. Margin is 20% on cost price. तो इसका मतलब ये जो margin है वो profit percentage ही है. Because you are calculating it over किस पे? Cost price पे. कई बार लिखा होता है profit percentage over selling price. तो इसमें ये मत कहिएगा कि profit percentage सिर्फ cost price से होता है. अगर mentioned है that there is a 20% profit over the selling price. Yesterday also we did one question. So it means it is a profit compared with respect to the selling price of. क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है. Okay. So I'm starting with the question number 10 now. ठीक है. Here we go. I want all of you to see it. कल sheet दिया था मैंने आपको? नहीं दिया था. I'm sharing sheet as well. 20. Okay. First information is discount is offered on mark price. The list price, the price which has been mentioned over the product, you can only give discount on that. You never give discount over the cost price or the selling price of an item. You give discount always on the mark price. I told you, I don't know how many of you remember it. Consider the mark price to be $100. How much is the discount given on this? 20%. So when you buy, when the merchant buy, he get 20% discount. So what is the cost price that he is going to put there? $80. He wants to mark them up at such a price that he can give a discount of 20% on the mark price. Still make a profit of 20% on selling price. So on selling price, you make 20% profit. But मैंने आपको कहा profit is always calculated over cost price. तो selling price का अगर 20% है भाई, तो cost price का ज्यादा होगा. ज्यादा होगा तो denominator कम होगा. I'll say over cost price, it is going to be 1/4, which is 25% of the profit. What is 20? I will say this will be 25% of the profit. 80 का 25% कितना होता है? 1/4 कितना होता है 80 का? How much is 1/4 of 80? 20. Yes. So should I say selling price will be 120? Sorry, 100 rupees. You will sell it at 20% profit over selling price, not over the cost price. So over cost price, it is coming out to be 25%, which is 1/4 of it. So the selling price comes out to be 100. I don't know the new mark price is MP/. I say this is X. You know, this mark price, there's a discount of kitna percent is given? 20%. Should I say selling price mark price से कम है? कितना कम है भाई? 20%. तो mark price selling price के क्या होगा? ज्यादा होगा. दोबारा सुनिएगा. ठीक है. We did not attend earlier class. Over the mark price is there is a 20% of the discount given on the mark price. That means if you are giving a 20% discount, this lower value is 20% lesser than upper value. Do you agree with it? मेरे पास आपसे 20% कम है, तो ये वाली value 20% कम होगा mark price से. तो mark price क्या होगा? If lower value is less, the upper value will be more. Should I say more? Numerator never changes, denominator will be decreasing. सबको पता होगा शायद ये. So this goes up by 1/4. What is 1/4 of 100? How much is 1/4 of 100? Because 100 is the selling price. Should I say it is 125?
So the new mark price comes out to be $125. I believe it is clear. How much you have been marking them? I will say they are marking to 125. जिन लोगों को, क्योंकि पहला ऑप्शन you always take the value, initial value always as a 100 rupees. Rupee मत लेना क्योंकि कई बार difference is given in a rupees. You always take it in a dollar. $100 is the initial cost price. We are giving a discount of 20%. तो mark price का 20% means $20 का discount. तो cost price you buy it at $80. आपने कहा I don't know what is the selling price, but over selling price I am making profit of कितना 20%. तो आप ऐसे भी कर सकते थे जिन्होंने नहीं पढ़ा. Cost price plus profit is equal to selling price, and this profit is equal to 20% of क्या selling price. Can I say that? Can I say the cost price is SP minus 20%? किसी नंबर से उसका 20% घटा दिया जाए तो क्या बचेगा? 80% of the cost price. Oh, sorry, selling price. What is the cost price, by the way? $80. $80 is equal to 80% of the selling price. How much is selling price? $100. Do you agree with it? Yes, no? So I will say it will be sold at 100. आपने कहा I don't know what is the new mark price, but there's a discount of 20% given on it. So can I say new mark price? If I reduce it by 20%, I give a discount of 20% on it. I will get the selling price, which comes out to be $100. So I'll say it is 4/5 of mark price is equal to this much. I divide it, it is 25. Mark price comes out to be 125. This is your answer. So there's iska ideal structure is conventional method के हिसाब से. We'll take mark price $100, cost price $80. Why? Because 20% of discount. Selling price, I don't know, X rupees. But I know cost price plus 20% of X is equal to selling price. Okay, which is equal to X. Cost price is $80 is equal to 80% of X. So X comes out to be $100. Selling price is $100. $100 का बिकेगा. ठीक है? Clear? I would say the new mark price is say $Y, but you give discount. कितना discount आप? 20% on it. ठीक है? Are you fine? Because there is a 20% discount on the new mark price and you still make a 20% profit. So I'll say Y minus 20% of Y is equal to $100. So 4/5 of Y is equal to $100. Y comes out to be 500/4, which is $125. ये सबसे आसान तरीका है conventional method में लिखने का, समझने का. So this is how you can write down the value. So mark price should be $125 क्योंकि इस पे आप 20% डिस्काउंट दोगे तो $100 का बिकेगा. ठीक है? And you are going to make $20 का profit over $100 selling price पे. So 20% of the profit is there. Is it fine? कुछ पूछना चाहते हैं पूछ. तो ये तो conventional method हुआ. मतलब any Tom, Dick, Harry who understand the basic concept will be solving it by this way. I want to tell you the another method that I've given you earlier. फिर भी एक बार दोबारा repeat कर लेता हूँ. Should I erase it? आप मेरी बात समझिए बस. I took something of $100, 20% discount. Selling price कितना हो गया? Sorry, cost price कितना हो गया? $80. I am making 20% profit on selling price. यहां से आपको सोचना है, स्टार्ट करना है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है. सेलिंग प्राइस पे 1/5 प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस पे और प्रॉफिट होगा. सोचो, एक बड़ी वैल्यू पे आपको 20% प्रॉफिट है तो छोटी वैल्यू पे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा. दोबारा सुनिए. मेरे पे 1 लाख पे मुझे 1 लाख का बोनस मिला तो 2 लाख हो गया. अब मैंने कहा जो मुझे अमाउंट मिला उसका 50% था. 1 लाख इज 50%, हाफ ऑफ 2 लाख. तो अगर मुझे ये हाफ मिला है तो छोटी वाली वैल्यू पे मुझे ज्यादा मिला होगा क्योंकि मेरी सैलरी तो कम थी. तो I'll say denominator should be less. 1/1 is 100%. There will be 100%.
ये समझ में आना इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने क्लासेस पहले अटेंड करी है दे शुड बी अवेयर ऑफ इट कि सेलिंग प्राइस पे 20% डिस्काउंट है तो कॉस्ट प्राइस पे ज्यादा होगा यार। न्यूमरेटर कभी नहीं चेंज करते हैं। आपने कहा कॉस्ट प्राइस पे 1/4 होगा। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? $100 खत्म। नाउ आफ्टर दैट अनदर स्टोरी स्टार्ट्स, द न्यू मार्क प्राइस and the selling price. The selling price is 1/5 less than mark price, so mark price will be more. So this is $100, it is 1/4 more. कितना हो गया? 125 खत्म। कितना the percent of the list price of which he should mark them? I'll say 125। $100 का जो price 125 का, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। दो कॉन्सेप्ट है, आपके पास मुझसे ज्यादा है, मेरे पास आपसे कम। मेरे पास आपसे ज्यादा है तो आपके पास मुझसे कम। पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट, बड़ी वैल्यू का 20% होगा तो छोटी वैल्यू का ज्यादा होगा। न्यूमरेटर नेवर चेंजेस, डिनोमिनेटर। इज इट फाइन? ठीक है, थोड़ा सा लगेगा बिकॉज़ यू नीड टू वॉच इंग्लिश क्लास। तो ये वाला कांसेप्ट आ रहा है यहां पर, यू कैन सॉल्व इट बाय दिस। ठीक है, आंसर आपका जल्दी आएगा इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। So I'll take initial price as $100. Dollar is always a better way. So wholesaler sell it, a manufacturer sell it to wholesaler at a profit of 10%. What will be the price at which wholesaler is going to buy it? 10% means 110. 10 jada, it is 10 more, so it is 110. The wholesaler sells the table to retailer. Retailer को कितने में बेच रहा है? 30% profit. So 30% of 100 or 30% of 110? 110. 10% of this is 11, 30% is 33. I will say it is $143 ka you are selling it to retailer. Okay. Finally, retailer sell it to the customer at a profit of 50%. Kitna lootoge? Okay. So what I'll do is 50% means half of it. So $143, half of that is 71.5. 0.5, I'll say $214.5 mein becha. But this price is given as in rupees, it is 4290. So can I say it is 20? $1 is 20. करोगे 214 का 428.5 का 1, 429, जीरो लगा। तो $100 जो इनिशियली मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट करता था वो कितने का करता? 2000. तो how much a table cost to manufacture? 2000. In a single line you can get the answer. Is it? Is this clear? 100 become 110, then it is 143, then it is 214.5. आपने कहा in terms of a dollar it is 214.5, but in terms of rupees it is 4290. सर 214.5 का अगर आप डबल करोगे ना सर 429 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका डबल जो है 429, एक जीरो है तो 20 हो गया। इसका मतलब $1 आपने पूरा डिवाइड किया तो $1 कितने रुपीस का है सर? 20 रुपीस। इनिशियल प्राइस क्या थी मैन्युफैक्चर की? $100। साहब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, I'll say it is 2000. Is it fine? Clear? Should I move to the next one? Yes. बिल्कुल लगेगा। सक्सेस चेंजेस करके दिखा देते हैं। ये क्लियर है सबको? I can also solve it by successive percentage change. It is 10% plus 30% plus 50%. What is 10 plus 30 का successive change? कितना होता है? 10 plus 30 plus 10 into 30 by 100. Sir, एक फॉर्मूला होता है, whenever you increase the value by A% then by B%, it gives you A plus B plus AB by 100. You multiply both these values. Whenever successively something is changing, you'll apply formula of A plus B plus AB upon 100. So I'll say it is 10 plus 30 plus 10 का भी 30% increment हुआ है. I will say this is 43% of growth. Then you combine it with 50% of the growth. So I'll say it is 43 plus 53, 50 plus 43 into 50 by 100. Am I right? Okay, which is 21.5. So this is 93 plus 21.5, 114.5% का growth होगा। तो 114.5% if something is growing, the value becomes कितना? 100 रुपए का 114 रुपए 50 पैसे बढ़ गया है, तो हो कितना गया है? 214.5. So I'll say the value of this becomes $214.5, which is equal to again 4290. Do the same thing after that to get the answer.
कौन सा वाला सर? पहले वाला बाद वाला? सर 3 चेंज हो रहे थे। सर मैंने कहा मेरा $100 में खरीदा था और मेरा $114.5 बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो व्हाट इट बिकम्स? 214.5। डू यू एग्री विद दिस? हाँ यार, मैं 100 रुपए था, अभी इतना बढ़ गया है, तो बढ़ने के बाद तुम्हारे पास अमाउंट तो इतना ही होगा ना? हाँ नहीं, इतना आपने इंक्रीज कर दिया, आपके पास $100 था, मैंने $114.5 और दे दिया आपको, $114.5। सो व्हाट, हाउ मच मनी डू यू हैव नाउ? You don't have 114.5, my dear. You have 214.5. Is it fine? हम्म हम्म तो आप सिर्फ ग्रोथ कंपेयर कर रहे थे। वो कह रहा है दिस बिकम्स द कस्टमर पेज, मतलब यू आर नॉट पेइंग ओवर द इंक्रीज, you are paying the total amount. So if it grows by 114.5, my dear, 100 grows by 114.5 does not become 114.5, it becomes 214.5. Are you getting my point? ठीक है, तो प्राइस क्या आया? 214.5. I believe it is clear. ठीक है, should we move to the next one? Everyone clear? Okay, here we go. Let's take up this. देख लीजिएगा. There are two successive discount. I give a discount of 25% plus 15% to all of you. I will start from this. आपने कभी देखा न्यूज़पेपर में लिखा था 50% plus 50% डिस्काउंट, आप पहुंच जाते हैं कि आज तो मुफ्त में दुकान लूटने के लिए कह दिया, नहीं ना? So what happened is 50% plus 50% discount, it is a successive percentage change. सुनिएगा सर, successive percentage change, whenever value increases by A then by B, the effective increment will be A plus B plus AB upon 100. ये फॉर्मूला है, इसे याद करना है। आपने कहा सर डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज ऑलवेज नेगेटिव, डिस्काउंट डिक्रीजेस द वैल्यू, व्हेन यू गिव डिस्काउंट प्राइस बढ़ता नहीं है, प्राइस क्या करता है? घटता है। तो आई विल से -50 plus -50 into -50 upon 100. I will cancel 2 zeros. I'll say it is -100 plus 25 is -75. How much percent discount you got? 75%. Fine, clear. So if I say there are two successive discount of 25% and 15% given to you, what is the effective discount? I'll say -25, I'll say -15 plus -25 into -15. हाँ जी बोलो सर। सोल्ड एट अ सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब लगातार दो डिस्काउंट दे दिया, 25 plus 15%. सो व्हाट इज इट? इट इज -40. सर माइनस इंटू माइनस क्या होता है? बहुत बढ़िया। 25 4 जा कितना होता है? 15/4 कितना होता है? 3.75. should I say it is -26.25? how much is the discount given? That is 26.25% of the discount is given. Sorry, 36.25. Is it fine? Now the final amount paid by retailer on that television set is, what was the initial price? 3200. This is the discount that you are giving. Means 3200 ka minus 36.25, this much of discount is offered. I'll cancel this. I'll say 3200 plus into minus minus hota hai. So I'll multiply 36.25 with 32. तो बहुत आसान तरीका देखो, 36.25 को डबल कर लो पहला, 36 72.5 हो गया, फर्दर डबल इट 145 हो गया, फर्दर डबल इट 290 हो गया, फर्दर डबल इट 580 हो गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यस नो? ठीक है, तो दिस मच। हाँ जी बोलिए। अरे 32 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो मैंने क्या करा, पहले 32 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार। हमने कहा एक बार डबल कर लिया 72.5, फिर दोबारा डबल किया, यहां तक 4 कवर हो गया, यहां तक 8 कवर हो गया, यहां तक 16 कवर हो गया। आपने कहा सर और करना है एक और, तो कितना हो गया? 1160। क्या मेरी बात समझ में आई? इतना डिस्काउंट अगर आप दोगे 1160 का, तो क्या बचेगा? ये 2040। दिस इज द डिस्काउंट दैट यू आर ऑफरिंग। तो कितना बचेगा? 2040। द फाइनल प्राइस ऑफ द, बिल्कुल करो,
क्या होगा? किसी ने पहले कैट लिखा है लास्ट में? कई बार वो माउस ढंग से काम नहीं करता, एंड यू विल बी ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड इफ यू आर गोइंग टू यूज दैट ऑनलाइन कैलकुलेटर. बाकी आपकी इच्छा, यू कैन यूज इट. आई डोंट वांट टू कमेंट. आई पर्सनली फील दैट इट देयर इज लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन व्हेन यू आर यूजिंग ऑनलाइन वन. इफ यू स्टिल फील कि मुझे ये मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं. ठीक है. दूसरा मेरा ये मानना है कि जब भी आप इन फ्यूचर वेन एवर यू विल बी सिटिंग देयर इन अ केबिन and you are discussing some business with your bosses, if you don't know how to multiply with 32, so I think this is something which is to learn. ये ऐसा नहीं है कि आपने देखा और ठीक है. Why I am doing it? Because it tells you how to improve on your calculation. 36.25, 72.5, 72 का डबल 144, 145. अब 145 के बाद तो बचा ही नहीं. 145 का डबल करो 290, 290 का डबल करो 580, 580 का डबल करो 500 का 1000, 80 का 160, 1160 आ गया. कहां जरूरत है? ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं है. लिखना भी पाप है अगर मैं लिख रहा हूं तो. ठीक है ना. मेरा कहने का मतलब है, इफ यू आर नॉट बेटर देन योर सबऑर्डिनेट्स, you have a very less chances of surviving in the industry. बाकी आपकी इच्छा, आप जो मर्जी करो. Is that fine? I will not recommend to go by these calculation. Use some brain, do it by this way. Let's come to the next one. ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट सर? आर यू कंफर्टेबल नाउ? थोड़ा थोड़ा आएगा, भी टाइम लगेगा. आपको सर ठीक लग रहा है? कोई चैलेंजेस तो नहीं है? बड़ा बहुत. यस, ठीक है. पहले से आपको अच्छा लगेगा, धीरे धीरे और यू स्टार्ट फीलिंग. ठीक है. यहाँ देवियम, all three of you. Let's take up this question. Maths is all about converting a statement into the equations. Maths is all about converting statements into the equations. I don't know what is the cost price of a pen. Let's take it as A, and the cost price of a book is B. When you lost 5% on A and 15% on B, there's a gain. You gain ₹7. I don't know what is 15%, but I'll write directly percentage. The second thing which is given here is gain of 5% on pen and 10% gain on book gives you ₹30. I'll sum up these two values. This get cancelled out. I'll say it is 25% of the book is equal to 20 rupees. 100% is a complete thing. कोई कहे 25% of the price of this book is 20 rupees. You want to find out the price of the book. इसका मतलब it should be 100% of this. हर चीज अपने आप में संपूर्ण है. Everything is 100% of itself. It is not 110%. It is not 90%. कोई भी चीज which is संपूर्ण, which is complete in itself, should be 100% of it. I'll multiply both sides by 4. I'll say it is 80. तो क्या book कितना price था? What was the cost price of the book? It was ₹80. I believe it is clear. Any answer? 15 apples for ₹1. 20 apples for ₹1. I want a number which is equal for both of them. एक नंबर बताइए जो 15 और 20 दोनों का मल्टीपल है. 60 ले ले. 15 4 जा 60 होता है, 23 जा 60 होता है. वैसे भी देखो, 15 is written as a 5 into 3. 20 is written as a 2 into 2 into 5. प्राइम नंबर में लेकिन 5 is common in both of them. I will take a 5. 3 is here. I'll write 3. 2 2s are 4 is here. So 4 3s are 12, 5s are 60 is the LCM. The smallest common multiple of both of them is coming out to be kya? 60. So if 50 apples are bought for ₹1, so 60 apples will be bought for how many rupees? I multiply both sides by 4. Do you agree with it? That gives you ₹4. 20 apples for ₹1. So 60 apples will come for how many rupees? I'll multiply both sides by 3. How many apples? 120 apples you bought for ₹7. Do you agree? But you are selling. The other part of this is 35 apples sold for ₹2. But 35 and 120 दोनों कोई multiple नहीं है. तो क्यों ना, why don't I convert them in a number which is a common multiple? So 35 is 7 into 5. Do you agree? And this is 5 into 24. बोलिए.
तो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 24, आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय किससे? 7 से. डू यू एग्री विद इट? तो 840 एप्पल्स यू आर गोइंग टू बाय फॉर ₹49. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस? 35 नीड्स टू मल्टीप्लाई बाय 24. तो 24 into 35. 24 5s are 120, 24 3s are 72. 72 plus 12 कितना हो गया? 84. 840 एप्पल्स. वैसे तो बराबर ही होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए इट इज रुपीज कितना? 48. You buy something for 49, but you sell. This is buy. For 49, you sell that for 48 rupees. Do you incur a profit or loss? Profit or loss? Loss. How much loss? 1 rupee. In percentage loss, I'll say I lose 1 rupee over cost price. What is the cost price, my dear? 49. So into percentages, अच्छा 100 by 50 कितना होता है? 100 by 50 कितना होता है? 2. तो 2% से डिनोमिनेटर लेस है, तो 2% से थोड़ा सा क्या होगा? ये ज्यादा होगा. Any value which is more than 2%. Oh, sorry, not profit, it is loss. इस चीज का भी ध्यान रखना है ना. Is it fine? Have a look. Ask me if there is any. Equal number of apples are bought. First, I need to convert the two varieties of apples. Quantity should be same. Second, 35 apples sold for ₹2. What you need to do is you need to convert a common value of 120 and 35 का multiple. Okay. 35 is 5 into 7 and 120 is 5 into 24. Multiply that by 24. Multiply this by 7. Should I move ahead? Let's take up this. As I said, it is a combination of English and maths that is even tested there in quantity aptitude. Okay. The trader sells 10 liters of mixture of paint A and B. So you got two paints A and B. जिनकी total quantity कितना है? 10 liters. The B in the mixture does not exceed. B ज्यादा नहीं है, तो B is less than equal to A. मेरे पास आपसे ज्यादा नहीं है, तो हम बराबर भी हो सकते हैं और मैं आपसे कम भी हो सकता हूं. बहुत बढ़िया. कई लोग इसको क्या करते हैं? लेस देन लगा देते हैं. बट दिस इज लेस देन इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ पेंट. इसका जो रेट है वो B का, से द प्राइस ऑफ B इज X रुपीज, सो दिस कम्स आउट टू बी X रुपीज प्लस 8. ठीक है. इफ द ट्रेडर सेल्स द एंटायर, टोटल सेलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 264 विथ 10% प्रॉफिट. 10% प्रॉफिट हुआ. द हाइएस्ट कॉस्ट of paint B. हाईएस्ट कॉस्ट क्या होगा पेंट? मैं कहा थोड़ा सा समझते हैं. अगर टोटल सेलिंग प्राइस 264 रुपीज एंड 10% प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से 1/10, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कम होगा. कितना कम होगा साहब? 1/11. तो 11 2s are 22, 11 4s are 44, 24 लेस, तो कितना हो गया? 240. Is it fine? कुछ को नहीं समझ में आया होगा तो कॉस्ट प्राइस प्लस 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस is equal to 264. That is how also you can do. Of course, it is certainly going to take a longer time. So I'll say it is 24. Cost price is 240. ऐसे भी कर सकते. ठीक है. मतलब करना ही है जबरदस्ती, मजा आ रहा करने में, चलो तो करो 240. Is it fine? तो आपने कहा सर दोनों को मिला के 240 का प्राइस है. अब जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा. 240 का प्राइस है कितना? 10 लीटर्स का. तो व्हाट इज द एवरेज प्राइस? कितना आ रहा है? 24 रुपीज पर लीटर. सही बोल रहे? व्हाट इज द हाईएस्ट मनी? मैंने कहा देखो इनको कंबाइन करके 24 रुपीज का प्राइस आ रहा है, और एक ए है और एक बी है जिसमें इसका प्राइस है X और इसका प्राइस है 8 रुपीज में. बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना ए और बी को बराबर कर लें. जब आपसे कह रहे हैं, सुनो मेरी बात, B is less than equal to A, but I would say what is the maximum price of B? तो आप क्या करोगे? मैक्सिमम प्राइस मतलब B एक से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए. मैं कहा बराबर रखोगे ना तभी तो बड़ा होगा. मैं कहा देखो तुम्हें और मुझे मैंगो मिले,
मैंने कहा यू आर ऑलवेज गेटिंग मैंगोज लेस देन इक्वल टू मी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैंगोज दैट यू गॉट? आप कहेंगे सर मैक्सिमम तभी मिलेंगे जब आपके बराबर मिलेंगे मुझे। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर ऑन दिस? तो व्हेन आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी, आई विल से द क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी आर कमिंग आउट बी से। इसका मतलब इक्वल क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस 24 रुपीज आ रहा है और 8 रुपीज का डिफरेंस है। अब यहां गलती हुई है लोगों से, लोगों ने क्या करा, एवरेज प्राइस 24 है तो दूसरे वाले को 8 कम कर लो। नहीं भाई, आप 4 कम करोगे तभी तो दूसरा 4 ऊपर होगा, तभी तो बीच की वैल्यू आएगी 24। है राइट? नहीं है। आपने कहा एक का प्राइस है x रुपीज और एक का प्राइस है x प्लस 8 रुपीज, दोनों को कंबाइन करके क्या प्राइस बढ़ेगा अगर इक्वल क्वांटिटी होगा? शुड आई से x प्लस 4? वो दिया हुआ है 24 रुपीज। अरे यार, एक x 10 रुपए का, एक 20 रुपए का, तो एवरेज प्राइस 15 रुपए तो बोलते हो आप, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हो अगर इक्वल क्वांटिटी है तो यहां पर एक x है, x प्लस 8 है, दोनों को ऐड किया तो 2x प्लस 8 डिवाइड बाय 2 इज x प्लस 4 विच इज 24। तो x कितना है? 20 और ये कितना आया? 20। क्या मेरी बात समझ में? दोबारा सुनिए, यहां तक सबको आ गया था कि 264 का 1.1 से डिवाइड किया तो 240 इज दी टोटल प्राइस ऑफ 10 लीटर। सो फॉर एवरी लीटर इट इज कमिंग आउट टू बी 24 रुपीज। आपने कहा सर बी की मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब बी और ए बराबर होंगे, दो क्वांटिटी बराबर है, दोनों 5-5 लीटर आपने ऐड किए, एवरेज प्राइस इज 24, द गैप बिटवीन देम इज 8। तो ये बात तो श्योर है, यहां से सुनो कि अगर मैं कहता हूं 8 का डिफरेंस है, बीच की प्राइस 24 आ रहा है, तो एक 4 ज्यादा होगा, दूसरा 4 कम होगा, तभी तो बीच की प्राइस आएगा यार। अगर एक का प्राइस आप 24 मान लोगे, दूसरे का 32 मान लोगे, इनका एवरेज कभी 24 आ सकता है? एक प्राइस आप 24 मान लोगे, दूसरा 8 कम कर लोगे 16, क्या इनका एवरेज कभी 24 हो सकता है? नहीं यार, 24 कुछ के पास 24 है, कुछ के पास 16, तो एवरेज इज इन बिटवीन। तो अगर आपको 24 एवरेज चाहिए तो दो की वैल्यू के बीच में 8 का डिफरेंस है, तो वन विल बी 4 मोर एंड सेकंड विल बी 4 लेस। तो एक 20 रुपीज होगा, दूसरा क्या होगा? 28 रुपीज। व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ पी? यस सर, समझ में तो आ गया। बस यही था कि ये जो लाइन थी, कॉस्ट ऑफ पेन टेपर लीटर इज 8 मोर देन दैट ऑफ बी, तो वही था मेरे को भी कि 16 और 8 24 ऐसे करके, तो यहाँ था हाँ थोड़ा नहीं, दिक्कत। ऐसा नहीं करना ना, क्योंकि एवरेज बीच की वैल्यू, अब एवरेजेस पढ़ाऊंगा उसमें और इस पे हाँ डिस्कशन जी, होगा। ठीक है सर, ठीक है। एवरेज होता है बीच की प्राइस, तो बीच की बिल्कुल। प्राइस 24 है और दो के बीच में 8 का डिफरेंस है, तो एक कम होगा 24 से, एक ज्यादा होगा। ठीक है, करेक्ट, ठीक है सर, ठीक है। फाइन, क्लियर, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? फोटो वगैरह खींच लिया करो आराम से घर पे बैठ के। ओके, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन नाउ। The question is very similar to what you have just done. The owner of a grocery shop purchases two variety of grain. The price of the first variety is twice of the second variety. So variety 1 is 2x price, variety 2 is x price. Okay. He mixes both the variety and sells the mixture at a 28 rupees per kg. Selling price, ये cost price है, rupees 28 per kg. Making a profit of 25%. कॉस्ट प्राइस से इसका मतलब ये 25% ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस कम होगा। कम होगा मतलब 28 का 1/5 कम होगा। 28 by 10 2.8 होता है, 2 by 10 इज इक्वल टू 5.6 लेस होगा, तो 22.4 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस। दोबारा बताते हैं, 28 by 5 जो होता है 5.6 लेस होता है, 28 में से 5.6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22.4 प्राइस आ जाता है। ये आपने कहा सर दोनों को कंबाइन करके इतना आ रहा है। The ratio of the variety of the grain and the second variety of the grain are in the ratio. अच्छा, इनका volume is given in the ratio of 2:3. So what is the total price come out? Total cost 2 into 2x plus 3 into x, ठीक है, which is equal to कितना? 22.4 divided by 5, क्योंकि एवरेज प्राइस लिखा है, ठीक है, तो कितना आ गया? What is this? 4x plus 3x is 7x by 5 is equal to 22.4. 7 3s are 21, 7 2s are 14, x is equal to 16. x आ गया 16 रुपए, और वैरायटी सेकंड का प्राइस आ गया, वैरायटी फर्स्ट का प्राइस कितना आएगा? 32. द
प्राइस ऑफ द फर्स्ट वैरायटी कम्स आउट टू बी 32 क्योंकि आपको लिखा हुआ है फर्स्ट वैरायटी कौन क्वांटिटी इसका मतलब प्राइस का प्राइस ये प्राइस का अब आप प्राइस निकालते हो एवरेज करेंगे और आपने यहाँ पर 2 किलो और यहाँ पर 3 किलो ले तो इसकी जो टोटल प्राइस है 5 किलो की प्राइस है आपने देखो आपने कहा इसका प्राइस है 2x 2 से मल्टीप्लाई करके भाई 1 किलो का 2x प्राइस है तो 2x का 4x होता है 2 kg इसका 1 का x है तो 3 का कितना होगा 3x तो टोटल कितनी क्वांटिटी 2 + 3 ठीक है सर दिस इज एवरेज किसी को कोई डाउट इसमें कुछ पूछना चाहे कुछ भी बहुत सिंपल है कोई कुछ ठीक है वट एवर इट इज सेइंग यू नीड टू अप्लाई दैट ठीक है कोई डाउट कुछ पूछना चाहे पूछ लीजिए मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है ये जो आप 28 रुपीज सॉरी 22.4 रुपीज कह रहे हो पर केजी this is the price of a mixture because you were selling it at 28 by making 10% profit over it sorry 25% profit over it so 5.6 is what you have gained as a profit if you subtract that you'll say the price comes out to be 22.4 ठीक है is it fine अच्छा इसको मैं लिगेशन से भी कराऊंगा कुछ लोग अभी भी घबरा रहे होंगे उनके लिए करना नहीं है अभी ये एक क्लास आएगी मैंने कहा 2x प्राइस है x प्राइस है and combining them you are getting 22.4 write down the change on diagonally opposite side 22.4 minus x write the change on other side because you write always positive change the ratio of this is 2:3 the ratio of this is 2:3 so 22.4 minus x upon 2x minus 22.4 is equal to 2/3 I'll cross multiply 3 4 are 12 66 67.2 minus 3x is equal to 4x minus ये हो जाएगा 44.8 I'll take this 68, 72, 72, 112 is equal to 7x. 7 से divide कर लिया, ठीक है? This comes out to be कितना? 7 1 7 6 x is 16. आ गया यार x 16. तो ये है लेकिन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है. There is allegation. We will come to a stage जहां पर ये सब कैलकुलेशन भी खत्म कर दूंगा. लेकिन there are stages which you need to follow. क्या मेरी बात समझ में? तो देयर इज अ टॉपिक व्हिच विल कम एज अ एलिगेशन अभी टाइम है उसको आने में ठीक है तो तुम्हें ये बताना चाहता हूं थिंग्स कैन बी फर्दर सिंपल ये अभी टाइम लगेगा आगे चले शुड वी मूव टू द नेक्स्ट वन एग्रीड कोई और आंसर आया किसी का 800 A dishonest dealer sells his goods at a cost price. The price at which I'm going to buy, I'm going to sell at the same price. Still, I make a profit of 25% by undercutting the weight. ठीक है तो आपने कहा आई डोंट नो 1000 ग्राम को मैं क्या लिखूं x ग्राम लिख लेता हूं x ग्राम दूंगा so should I say how much weight I saved and how much I sell तो इस पे मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ 25%. क्या मेरी बात समझ में आई दोबारा सुनो जिस प्राइस में मैं खरीदता हूं उसी का पैसा मेरे हिसाब से मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए बट व्हाट आई डू इज आई एम गोइंग टू rig the weighing machine so that it will be going to give you lesser weight. आपने पता नहीं सर 1000 ग्राम को x ग्राम कर दिया कितना ग्राम बचाया आपने कितने ग्राम का प्रॉफिट पैसा तो आप 1000 ग्राम का ले रहे हो लेकिन आपने बचाया कितने ग्राम का पैसा 1000 माइनस x का कितने पे दिया ये 1000 नहीं दिया मैं किसी को 1000 ग्राम कह के 500 ग्राम देता हूं ध्यान से सुनिएगा तो आई हैव अर्न द प्राइस ऑफ 500 ग्राम ऑन 500 ग्राम दिस इज व्हाट आई इन्वेस्टेड क्योंकि मैंने दिया तो उसे 500 ग्राम है इट इज गोइंग टू बी 100% प्रॉफिट कितना परसेंट प्रॉफिट तो मैंने कहा नो आई डोंट नो हाउ मच इज द वेट ऑफ इट बट द प्रॉफिट इज 25% which is 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई देम 4000 minus 4x is equal to x
और 5x is equal to 4000, x comes out to be कितना 800. So I'll say the 1000 grams should be changed to here I go. I will be telling you 2-3 ways to get the answer. Please write down this question. A milkman sells नहीं एक सेकंड और चेंज कर लेते हैं. A milkman mixes 100 liters of water to 800 liters of milk. He further increase the price of milk by 11.11%. For your kind information, fraction is 1/9. Find the profit percentage. ठीक है. On selling 800 liters of milk. तो किसी ने 800 लीटर मिल्क बेचा, ठीक है, लेकिन उसने क्या करा, 800 लीटर मिल्क. A milkman buys 800 liter of what milk, added 100 liter of water and then selling it. जिस प्राइस पे खरीदा था उससे 11.11% of the price is increased. You tell me how much percent profit he has made here. कितना परसेंट उसने प्रॉफिट बनाया, ठीक है. That is what you need to find out. Come on, first you say the cost price of 800 liters of milk at the rate of ₹1 per liter. How much will it cost to the milkman? 800 rupees. Do you agree with it? Say the milkman buys milk at the rate of ₹1 per liter. 800 liter of the milk will be bought at 800 rupees. So what is the selling price of 900 liters of milk solution? Why? As 100 liter of water is added to it. At the rate of ₹1 plus 1/9, ये increase हुआ है. That is at the rate of 10/9 rupee per liter. So should I say it is 900 liter of the solution? You are selling it at 10/9. This cancel out. You will say you will make 1000 rupees. कितना बनाएगा पैसे? I bought it at I'm increasing the price by 1/9. 1 plus 1/9 is 9 1 is 9 plus 1 is 10/9. Is it fine? Sure. So 900 liter because 100 liter of water is added. आप इसे mineral water मत समझिएगा. टूटी का पानी है जो फ्री में आता है म्युनिसिपैलिटी वाला. So 900 liter of milk solution will become 900 into 10/9 rupees because this is the new price. You increase the price by 1/9. तो 1 rupees का प्राइस आपने 1/9 इंक्रीज किया तो 9 1 9 प्लस 10/9 rupees हो जाएगा पर लीटर. क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है. This gives you 1000 rupees. How much profit do you make? 1000 rupees is selling price, cost price is 800. Should I say you make a profit of 200? ये profit 200 किस पे बना? 800 पे. बहुत अच्छा, very good. The profit percentage comes out to be 200 over 800. This is 1/4, which is 25%. Is it fine? Because you increase the price by 1/9, so 1 plus 1/9 is 10/9.
Clear. I can see in this question there are two successive changes which are happening here. What are those changes? There are two successive changes which have been happening here. First is addition of water. पैसा कैसे बनाया जाता है? पानी मिलाने से, plus to increase the price, markup, दाम बढ़ा दिया. How much water is added to? I will say this is the profit. The markup is 1/9. अभी तक मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला A% plus B% का, जब भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है उसको लिखते हैं A plus B plus AB upon 100. When the values are in fractions, I will write P and Q are the increase that you are getting. You will say it is P plus Q plus PQ upon 1. क्योंकि फ्रैक्शन है upon 1. Upon 1 वाला कुछ मत लिखना, plus PQ लिख लेना. Why? Because it is in fraction. Do you understand? तो हमने कहा ये 1/8 plus 1/9 plus 1/8 into 1/9. What is the LCM? This is 72, this is 9, this is 8. Can I take the LCM of the denominator as a 72? I should multiply numerator and denominator by 9 to make denominator 72. I should multiply numerator and denominator by 8 to make denominator 72. And this comes out to be 18 upon 72, which is 1/4. How much is 1/4? 25% profit. How much is 1/4? 25%. Formula you need to remember. The successive percentage change. लगा दो. ठीक है. I'm giving you one more way. Please write it down. Take a picture of it. Try question with a multiple of ways. Should I erase it? $800 लीटर्स मिल्क था, पानी मिला के 900 लीटर बनाती है. एक काम ये वो. दूसरा, ₹1 में खरीदा था, आपने मार्कअप कर दिया 1/9, मतलब 10/9 बना दिया. अच्छा, you need to tell me one thing. When you multiply a number by 1, what happens to the number? Does it increase, decrease, or remain same? It remains same. Everyone agree with it? When you multiply a number by more than 1, what happens to the number? Does it increase, decrease, or remain same? It increases. If you double a number, it will increase. If you multiply a number by 1,000 times, it increases. When you multiply a number by less than 1, then what happens? ठीक है, किसी को half कर दो, तो less than 1 का मतलब 1/2. I'll say I'll decrease. किसी को -2 से multiply कर दो, सर decrease होगा. So 1 is a crucial point here. If you multiply a number by 1, number does not change. More than 1, number increases. Less than 1, number decreases. Okay. Let's take up this one now. आपने कहा 800 लीटर का 900 लीटर कर लिया. प्रॉफिट है, लॉस है? मिल्कमैन को प्रॉफिट मोर देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, 1 होता है, मोर देन 1. तो 800/900 लिखूं या 900/800 लिखूं? I want a profit. Profit is more than 1. What should I write? ये दोनों वैल्यू को, ये एक को न्यूमरेटर एक को डिनोमिनेटर में लिखना है. क्या लिखूं? बहुत बढ़िया, 900/800. जब आप इसके बारे में बात करेंगे आप कुछ नहीं सोचेंगे, इंडिपेंडेंट मानेंगे. ₹1 का सामान खरीदा आपने, प्राइस बढ़ा दिया, 10/9 में बेच रहे हैं. आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? मिल्कमैन को प्रॉफिट. प्रॉफिट मोर देन 1, लेस देन 1? मोर देन 1. मोर देन 1 का 1/10/9 लिखूं या 10/9/1 लिखूं? 10/9/1. इंडिपेंडेंट वैल्यूज को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे डिपेंडेंट हो जाएगा. घबराना नहीं है. कैंसिल देम. 9 also get cancelled out. The answer comes out to be 10/8. You cancel it 2 from there. It is 5/4. Don't forget to subtract 1. 1 means no profit, no loss. It is 1/4. That's fine. So there is going to be 25% profit there. Do you understand? When a value is more than 1, gives you a profit. When
whenever the value is less than 1, it gives you loss. So 1 rupee का item अगर आप 10 by 10 में बेच रहे हो, which is more price, it means more value should come. Very good. बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर. यहाँ हमने माइनस नहीं करा क्योंकि हम सिर्फ चेंज का डिस्कशन. Here we are discussing the values. So whatever is the ratio coming out, you need to subtract 1. 1 का मतलब था no change. So when you subtract no change, it is coming out to be positive value. I will say it is an increase. If it comes out to be negative, I will say this much is drop. क्या मेरी बात समझ? Here we are talking about the changes. यहाँ हम change के बारे में बात कर रहे हैं. हम change नहीं discuss कर रहे हैं. हम values discuss. Initial क्या था, बाद में क्या था. So when you find out a change, do remember you need to always subtract 1 from there. Any fraction when you want to find the change, do subtract 1 from there. Is it fine? Clear now, everyone? ठीक है. Question. A store offers 2 items free with every 5 items purchased. The store manager mark up the price of the items at 16.66%, which is 1 by 6 in fraction. Find the profit/loss percentage. एक मॉर्निंग स्टोर वाला लिखा था, उसका 5 खरीदो 2 मुफ्त में दूंगा, लेकिन जितने का प्राइस था वो खरीदता है उसका 1 by 6 प्राइस इंक्रीज कर देता है 16.66%. आपको बताना है हाउ मच प्रॉफिट इज गेनिंग और लॉस इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज. ओके, 3 मेथड बताए थे आपको, दोबारा वो तीनों मेथड डिस्कस करते हैं. कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो बाय दोस 3 मेथड्स? हियर वी गो. लेट्स से द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आइटम्स. आप शुरू में 7 आइटम्स क्यों ले रहे हैं? दुकानदार ने तो 7 आइटम्स ही खरीदे थे, 5 के साथ अगर 2 मुफ्त देता है तो शुड आई से, अच्छा बाय द वे 1 by 6 इज 16.66%. तो मैं क्यों ना एक नंबर ले लूं जिसका 1 by 6 निकालना बहुत आसान है. कैन आई टेक 6 रुपीज? 6 रुपीज का 1 by 6 कितना होता है? 1 rupee. Very good. The cost price of 7 items at the rate of ₹6 will come out to be ₹42. The selling price of 7 items, 2 are free, लेकिन आप तो 7 ही दे रहे हो. At the rate of ₹6 plus 1 by 6 of ₹6, which is at the rate of ₹7, comes out to be कितना? 5 sevens are 35. Why? Because you are selling only 5. 2 of them are free. You buy something at 42 rupees, you sell at 35 rupees. Is it a profit or loss? Loss. There is a loss of kitna? So loss percentage is what? You lose 7 rupees over 42 rupees, which is 1 by 6, which is again 16.66% loss. Anyone who got this answer? Very good. 1, 2, 3. Very nice. Is it clear? सोचिए आप इसमें कोई डाउट है तो पूछिए. Second, successive percentage change. One is markup, second is discount. यही तो 2 काम हुए इस क्वेश्चन में. मार्कअप कितना हुआ? 1 by 6. डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 2 by 7. अरे भैया, you give 2 free out of total. जब भी डिस्काउंट निकालते हैं, free items comes in the numerator and total comes in the denominator. So there's a discount is negative, markup is positive, plus 1 by 6 into minus 2 by 7. I'll take LCM of the denominator as a 42. I'll say 7 minus 12 minus 2, which comes out to be minus 7 by 42, which is minus 1 by 6. Minus 1 by 6 is what?
I'm erasing it now. How many items you buy? How many you sell? You buy at 6 rupees, you sell it at 1/6 ज्यादा, 1 रुपए ज्यादा. इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस है. आई गिव डिस्काउंट. इज इट अ प्रॉफिटेबल फॉर मी और लॉस? अरे भाई मैं डिस्काउंट दूंगा तो प्राइस बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा यार? लॉस होगा. लॉस इज लेस देन 1 और मोर देन 1. क्या लिखूं, 5/7 और 7/5? तो शायद 5/7. इट इज अ लॉस. 6 रुपीज का खरीदा, 7 में बेचा. मैम प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है. 6 रुपए खरीदूंगा, ज्यादा में बेच रहा हूं. प्रॉफिट को मोर देन 1 और लेस देन 1? मोर देन 1 में 7/6 और 6/7? 6/7. बहुत बढ़िया. मोर देन 1 7/6 होता है मैडम. ये कैंसिल आउट हो गया. 5/6. Don't forget to subtract 1. Why we are subtracting 1? Because these are the prices, these are not the changes. So I will say this is minus 1/6, which gives you 16.66% का क्या? Loss. 3 methods. You need to be fluent in all the 3 methods to get the answer. ठीक है. बचे हुए क्वेश्चन आप. सर मैंने कहा 100 रुपए का खरीदा, 120 रुपए का बेचा. सर 1.2 आ गया. प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको हमेशा 1 सेपरेट करना पड़ता है. बचा 0.2. फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 20%. आप सही कह रहे हैं ना, 100 रुपए का खरीदा, 120 में बेचा, तो 20% का प्रॉफिट. 120% का प्रॉफिट तो नहीं होगा. तो जब आप वैल्यूज लेते हो तो वो जो फ्रैक्शन आता है उसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं. मैंने पहले भी बताया था, एसपी अपॉन है होगा. हाँ, तो एसपी अपॉन सीपी इज नोन एज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर. Whenever you want to find out a change, profit or loss, subtract 1 from there in 200 crore. Is it fine? Clear?